Good evening, everyone. Thank you for taking the time to join us today. I am Samir Kumar from Allport, and it is a pleasure to welcome you all. We are honored to have with us Mr. Vikas Agarwal, a seasoned professional with over 25 years of experience in the investment and wealth management industry. He is widely respected for his deep market insight and client first approach. Let's dive right in and hear from Mr. Vikas Agarwal. Over to Vikas ji. Yeah, thank you, Samir ji, and thanks to all the participants for taking the time out from your busy schedule and joining in. So later, what we do every month is we share our house views on the markets, try and understand what's happening in and around the economy, and share some data points with you, which will give you some perspective about what's happening because we keep hearing a lot of noise about import, export, economy, GDP number, data, etc. So what we do essentially is at all port experts, we try and analyze these data points and share it with all of you. So can you see my screen? Yes, yes. All right. Okay. So we are now known as all port. All port is nothing but alt is nothing but alternate and port is your portfolio management services. So we have recently got the trademark for this logo as well, all port, and we are alternate and portfolio management services experts. So this is the outlook for July. Let's look at a couple of data points without any further ado. So as you can see globally, what is happening is that we've received data points from OECD and World Bank. Well, both of them are respectable organization as far as tracking the global GDP numbers. And according to them, they have expected and projected that the world will grow at the rate of 2.9%. So this has been revised from 3.2% to 2.9% because please remember the quarter is already over, in the sense that, well, there was a fear in the market in the month of April that what will happen to the trade war. Now at least there is some amount of consensus that the trade war will continue, but there will be some negotiation which will take place, and here and there economy will continue to run. So what people were expecting, that there will be a time like 2000 and 1929 to 1932, which was a global meltdown and the biggest recession time, and because of the trade war it can happen like that. At least those things have gone away, and people believe that maybe 10% plus and minus economy will continue to move on. So this has been projected at 2.9% both by World Bank and OECD. Generally they don't come in the same page as far as data is concerned. There would be a difference of 10 to 20 beeps always. Revisions, as I said, is based on continued bilateral tariff and trade tension which is happening across the globe. Now, when you look at this data point, India continues to be the growth engine for the globe, in the sense that it is rather revised from 6.3% to 6.4%. We are the only economy perhaps where upward revision took place. And from 6.3 now, we are expected to grow at 6.4%. No country in the world, be it small, mid-size, or a large economy like us, is even closer to us when it comes to the growth rate that we are enjoying, which is about 6.4%. Now, the other thing is North America and China, both of them have shown sharpest decline in terms of economy slowdown. So when you look at China, they were also growing at a similar rate the way we were growing till about last year. And there we saw that it has come down from 6% to 5.5 first, then 5. Now they're talking about 4.8%. And overall World Bank also cut the forecast to 2.9% in 2025. But in 2026 and 2027, the world will come back to 3%, and India continues to grow at about 6.5% average. This is the global inflation number. We track the inflation number. Inflation number plays a very, very important role in any of the economies across the globe.
And what we saw is basically a mixed reaction this time. We saw on the one side, your Eurozone, basically most of the Eurozone economies, there the inflation is flattening or maybe declining. But on the other hand, we saw UK, particularly the inflation is going up in UK, while US and Japan saw sticky, as in above targeted inflation driven by service sector cost. On the other side, Brazil and Russia continue to report elevated inflation. But surprisingly, like Japan, China is facing deflation, reflecting weak domestic demand. देखिए बोलते थे कि इंडिया एंड चाइना का जो कंजम्पशन डिमांड है वो सबसे ज्यादा है अक्रॉस द ग्लोब. But for the first time from last quarter onwards, what we are witnessing is that the demand in China is also declining day by day, and there is good amount of concern as far as employment is concerned. Although, like US, which tracks employment data, which tracks inflation number, and basis that they change their economy policy. But unlike US, China does not pay enough attention to employment data. But this employment data clearly indicates that that is also slowing down. And South America inflation remain below the target. In India, RBI keeps a target of having 4% as an inflation rate. With 4% to inflation hona hi chahiye. And what we are witnessing is that inflation remains moderately above 4% around target, in and around that, which is good. I mean, from an RBI point of view, 4% target, देखिए एकदम ज्यादा नीचे चला जाता है 2.5%. So that is also not good for our economy as in inflation. And 4% के आसपास होता है, तो that is a good number. So we are closer to that. Let's look at policy rates. पॉलिसी रेट में क्या हो रहा है? पॉलिसी रेट में एक तरफ में आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये आपको इंडिकेट करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है. जैसे कि भाई कनाडा, जापान, यूके, यूएस, यहाँ पे कोई रेट अनचेंज नहीं हो रहा है. लेकिन इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया में 50 बीप्स का भी रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कट, एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अनदर 50 बीप्स ऑफ रेट कट. सो देर इज RBI who is supporting the economy, and there is Government of India, the Ministry of Finance, which is also supporting the growth. So when both of them have come together, I'll show you in the next slide how both the engines are firing in India. And on the other side, advanced economy like New Zealand, South Africa, the ECB, Sweden, Switzerland, they have reduced their policy rate by 25 bips. So interest rate जो cycle होता है, ये इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन के बेसिस पे कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है और उन्हें कितना सपोर्ट चाहिए. अभी चाइना में तो क्या हुआ है, रेट कट भी हो गया, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, मतलब डिमांड नहीं आ रहा है वहां पे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. सो जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ यहाँ भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है. कि ब्राजील ने तो मतलब 50 बीप्स का रेट बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, मतलब ऑन दी अदर साइड. एंड इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, फिलीपीन, दे आर कटिंग रेट्स बिटवीन 25 to 50 बीप्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेट कट? जब भी इंटरेस्ट रेट में रेट कट होता है तो उस इकोनॉमी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, और जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है तो लोन एंड बोरोविंग बढ़ती है. लोन और बोरोविंग बढ़ती है तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है. क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तो वो नीचे डाउन द लाइन इकोनॉमी में वो फंड्स यूटिलाइजेशन होता है, और उस फंड यूटिलाइजेशन से जीडीपी जनरेट होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्रैक दिस नंबर, व्हाट इज हैपनिंग across the globe in terms of interest rate. This is FOMC policy update. So FOMC also updates the data. So इसमें ये देखने को मिला है कि solid economic growth and amid export swings. Despite बहुत सारे जो है इतने सारे फ्लक्चुएशन आए, आप देखेंगे, बट डोमेस्टिक डिमांड जो है ना वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है. इन्फ्लेशन भी जो है थोड़ा सा एलिवेटेड है, बट अक्रॉस द ग्लोब वही रेट पे आ रहा है. पॉलिसी रेट जो है 4.25 to 4.5 आ रही है.
एंड अनसर्टेनिटी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन रिस्क रिमेन्स। इसका मतलब मैंने जैसे आपको बोला पिछली स्लाइड में कि ये जो ट्रेड वॉर का जो टेंशन है, इससे लोगों को पता चल गया है कि भाई ट्रेड वॉर तो होगा, बट ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी 1990 30 1929 और 1930 कि ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका चला गया और ग्रेट डिप्रेशन में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज चली जाएंगी। ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, तो दैट इज अ कंसर्न। बट अदरवाइज जो फेड फंड्स हैं उसका जो रेट है वो 4.2 टू 4.5 के आसपास चल रहा है। जैसा मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक, आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का अगर 7 डेज का एवरेज पीरियड निकालेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कंटिन्यू टू शो साइन ऑफ फ्रेजिलिटी। मतलब वहां पे थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। पर अगर आप देखते हैं मंथली ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स होता है जिससे आपको अनसर्टेनिटी पता चलती है, वो थोड़ी सी इंचअप होते हुए दिख रही है। सो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी हैज eased from April heights, supported by positive development like the US tariff freeze and certain bilateral trade agreement. अब क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि सब कुछ जो है डॉलर में होता था, मतलब हर इकोनॉमी डॉलर अपने पास रिजर्व करती थी बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत सेफ फील करती थी। अब धीरे धीरे वहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी लोगों को ये लग रहा है कि यूएस का डेट जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है, $36 ट्रिलियन है, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के गाइडेंस में $40 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा। और गवर्नमेंट के पास उनकी कैपेबिलिटी टू सर्व द डेट इज ऑल्सो गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द लो टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ द लो टैक्सेस एट द ब्रॉडर लेवल। तो लोगों को अब क्या लग रहा है, जो बाकी की कंट्रीज हैं जो पहले यूएस डॉलर को बहुत ज्यादा मानती थी और बहुत ज्यादा उसको रिजर्व करने की कोशिश करती, पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है कि ग्लोबली डॉलर जो है उसका रिजर्व लोग कम कर रहे हैं और गोल्ड का रिजर्व ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एंड इंडिया एंड चाइना कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट वन इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड अक्रॉस द ग्लोब। लास्ट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट मंथ उसका डेटा भी दिखाया था कि इंडिया और चाइना ने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व किया है पिछले 4 सालों में। तो यूएस डॉलर हैज कम अंडर सस्टेन प्रेशर इन द रिसेंट मंथ, ड्रिवन बाय ग्रोइंग इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटलुक, जैसा मैंने आपको बोला। एंड ये जो सेंटिमेंट्स है कि बीच में ऐसा भी था कि भाई डॉलर, अमेरिका क्या चाहता है कि भाई डॉलर में सब कुछ हो, तो ये जो ऑयल के ट्रेड होते थे इनको बोले थे कि ग्लोबली आपको डॉलर में ही रखना है। अब वो डॉलर में नहीं रख के कुछ एक कंट्रीज में, जैसे अभी रशिया और इंडिया का जो ऑयल का जो ट्रेड हो रहा है वो रुपये में हो रहा है, तो डॉलर में नहीं हो रहा है। तो कुछ एक कोशिश ये भी है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी भी दिया ब्रिक्स को कि आप अगर अपना अलग करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसे ट्रेड वॉर मानेंगे और आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। Now let's come to domestic story of India. So manufacturing PMI डेटा, ये देखिए जो PMI डेटा मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर 50 के ऊपर है तो आप एक्सपेंशन में, 50 के नीचे है तो आप कॉन्ट्रैक्शन में। तो जून में जो है 2025 में इंडिया ने जो, इट हैज मेंटेन द सेम पोजीशन एज द फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी अमंगस्ट मेजर नेशंस, विद इट्स PMI राइजिंग फ्रॉम 58 फ्रॉम 57 पॉइंट। पिछले महीने हमने देखा था 57.6 था, मई में देखा था, और जून में 58.4 तक पहुंच गया, विच इज इंडिकेटिंग रोबस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो देखिए, आई डोंट नो, इतना सारा नॉइस होती है मार्केट में, बट दिस इज द रियल डेटा, एंड डेटा स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, एंड इट इज नॉट अ स्टोरी। एंड इट वाज फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ऑफ लेट काफी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स यूएस भी कोशिश कर रहा है कि वापस से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रिस्टोर किया जाए, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है बाकी के कंट्री में कम हो जाए और उनका जो नेट जो इंपोर्ट है इकोनॉमी वो ब्रेक इवन हो जाए। इनफैक्ट दे वांट टू एक्सपोर्ट, बट they don't have enough labor to support these manufacturing units, but whichever way it is possible. And
चाइना में भी फॉर अ चेंज, बिकॉज पिछले महीने पहली बार ऐसा हो कि चाइना में भी पॉजिटिव पीएमआई ग्रोथ देखने को मिला है, एंड इट हैज क्रॉस द लाइन ऑफ 50, which means that it has come in expansion now. Otherwise, it was in contraction for some time. But India continues to be number one across the globe. Secondly, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग सिस्टम ने अभी 2 लाख करोड़ का रेट कट करके 2 लाख करोड़ पंप किया है, जो बैंक्स के थ्रू लिक्विडिटी पंप की है, और सीआरआर कट करके 2.5 लाख करोड़ उन्होंने फर्दर भेजा है। और मेजर आरबीआई लिक्विडिटी मेजर क्या होती है कि 5.2 लाख करोड़ इंजेक्टेड थ्रू ओपन मार्केट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मोटा मोटी 7.5 लाख करोड़ जो है वो ओपन मार्केट के थ्रू आरबीआई मेजरमेंट के थ्रू लिक्विडिटी क्रिएट की गई थी। तो ये आरबीआई का पूरा जो सिस्टम है, और उन्होंने भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड भी दिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लास्ट मंथ उन्होंने। सो ये एक ऐसी आरबीआई है जो पैसा कमा के दे रही है गवर्नमेंट, मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है इकोनॉमीज में। एंड सीआरआर कट करने के बाद में ओवरऑल जो लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई है वो बहुत अच्छी आ गई है। करीब करीब 9.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी का इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। एंड ये हुआ है सितंबर 6 से नवंबर 2009 के बीच में, जो सीआरआर कट हुआ था, फिर ओपन मार्केट किया था, फिर इंटरेस्ट रेट कम किया, इंटरेस्ट रेट 2 बार कम किया, लिक्विडिटी सरप्लस लिया, मेजरमेंट लिया, जिसके वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तो इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, और जिससे फिर एक्टिविटी बढ़ने लगती है, इससे जीडीपी का प्रोडक्शन होता है। ट्रांसमिशन टू बैंक डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट, जैसा मैंने बोला, आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। रेपो रेट होता है कि भाई आपको उतना फंड्स मेंटेन करना है बैंक में अगेंस्ट आपके डिपॉजिट, वो 50 बिप्स से कम कर दिया, तो वहीं पे करीब करीब 2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी क्रिएट होता है मार्केट बैंक्स में। लैंडिंग रेट काफी अभी कम होने ऑलरेडी चालू हो गए, लोन सस्ते होने लगे हैं, डिपॉजिट रेट में इंपैक्ट आया है, जो एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट है उसमें चेंजेस आए। फ्रेश डिपॉजिट इज डिक्लाइन बाय 27 बिप्स एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मॉडरेटेड बाय 1 बिप्स। एंड पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बैंक, इसमें भी काफी देखने को मिला है कि आउटस्टैंडिंग जितने भी लोन हैं और जो भी कलेक्शन करते हैं, जो फ्रेश लोन आ रहे हैं उसमें रेट डिक्लाइनिंग चालू हो गया, एंड ओवरऑल लिक्विडिटी का फायदा हो रहा है इसमें। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज, 2 3 4 5 पैरामीटर हमने लिए हैं। तो पहला है डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, आप देखिए 2024 में 5.9 था, जो कि मई में पर्टिकुलरली 3.7 पे आया। अर्बन अर्बन डिमांड में आप देखते हैं तो, लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो ये पर्टिकुलरली मई में डिक्लाइन हुआ है, बट अदरवाइज 9.9 9.7 का ग्रोथ देखने को मिलता है। शायद पिछले बार जो अहमदाबाद में एक हादसा हुआ है जिसके वजह से काफी कैंसिलेशन हुए थे, उसकी वजह से देखने को मिला है कि डिक्लाइनिंग हुई है डोमेस्टिक एयर पैसेंजर में। रिटेल पैसेंजर व्हीकल सेल्स, सो अर्बन में थोड़ा डिमांड अभी भी वीक है, जो कि पिछले साल ये टाइम पे -1 था, जो भी -3.1 है। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है व्हीकल सेल्स की वो अर्बन मार्केट में कम हुई है। लेट्स लुक एट retail demand. So retail demand continues to grow. ऑटोमोबाइल सेल्स आप देखेंगे पिछले साल 2.6 था, जो इस साल डबल हो गया, ऑलमोस्ट 5.1 हो गया है। रिटेल ट्रैक्टर सेल्स पिछले साल माइनस था इस टाइम पे, जो कि अभी ऑलमोस्ट 2.8% पॉजिटिव हो गया है। मनरेगा का जो वर्क डिमांड है वो माइनस में चल रहा था पिछले साल 14% में, जो कि अभी पॉजिटिव हो गया, मतलब अभी कोई भी वर्कर आपको मिलेंगे नहीं, उनकी इतनी डिमांड है कि they've already started traveling across the globe and doing a lot of construction work in India, in and around the economy. And retail टू व्हीलर सेल्स जो है वो भी बिकना चालू हो गया है। देखिए गाड़ी कब खरीदता है किसान, जब भी उसको प्रॉफिट हो रहा हो, और अगर ये नंबर है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि 2.5% से वो 7.63% पे चला गया। सो योर रूरल डिमांड आउटपेस दी अर्बन डिमांड। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये आपको बताता है कि ओवरऑल जो कंजम्पशन है इंडिया में वो भी काफी देखने को मिला है कि उसका भी जो
कॉन्फिडेंस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और रूरल में भी जा रहा है और अर्बन में भी जा रहा है. एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्रीन लाइन, all of these basically indicates considerable resilience of the economy, Indian economy, not withstanding with global economy trade and geopolitical uncertainty. कितना ज्यादा geopolitical चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, और कंजम्पशन भी इंडिया का बढ़ रहा है अनलाइक चाइना, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि 3 सिलेंडर फायर हो रहे. पहला मैंने आपको दिखाया है इसकी स्लाइड में कि कैसे आरबीआई लिक्विडिटी एक्सपैंड, लिक्विडिटी बढ़ा रही है, ग्रोथ सपोर्ट कर रही है. फिर मैंने आपको दिखाया कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है बैंक डिपॉजिट का, और लैंडिंग रेट कम हो रहे हैं. दूसरा दिखाया कि देखिए सेकेंड सिलेंडर जो है कंजम्पशन का, वो कैसे फायर हो रहा है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. एंड जो थर्ड सिलेंडर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है कि गवर्नमेंट भी कैपेक्स अपना ले रही है और खर्चा कर रही है. जैसे पिछले अगर आप साल में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इन 25-26, आप देखते हैं अप्रैल 2025 में 1,60,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया, 61% हायर देन अप्रैल ऑफ 2024. तो 2024 में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ स्पेंड किया था. तो दिस सिलेंडर इज ऑल्सो फायरिंग. फिर मई का डेटा देखते हैं, मई में 61,000 उन्होंने स्पेंड किया, और पिछले मई में 44,000 स्पेंड किया था. अच्छा, अभी तो आपको आगे को देखने को मिलेगा, जुलाई के बाद पिछले साल गवर्नमेंट धीरे धीरे डिक्लाइनिंग करने लगी थी. यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अभी यहाँ पे तो रिवर्स गेम चल रहा है. क्यूमुलेटिव अप्रैल टू मई 2,21,000 करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, और उसके पहले पिछले साल उन्होंने 1.43 लाख करोड़ स्पेंड किया था. एज यू कैन सी बिटवीन 2024, 25 एंड 25-26. तो जो रेड ग्राफ है वो 25-26 का है, और जो ग्रे ग्राफ है वो 24-25 का है. तो गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रांगली सरप्राइज किया है, और ये तीसरा सिलेंडर फायर कर रहा है. जब भी गवर्नमेंट कैपेक्स देता है, गवर्नमेंट स्पेंड करता है, तो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लेड बाय कैपेक्स. देन यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज लेड बाय कंजम्पशन. उन्होंने क्या किया कि 12,75,000 के नीचे वालों को टैक्स फ्री कर दिया. तो टैक्स फ्री कर दिया तो जो 20% उनका टैक्स कटता था, मोटा मोटी 2-2.5 लाख रुपए, वो उनके हाथ में आ गया, विच इज अबाउट 20,000 रुपीज पर मंथ. उससे कंजम्पशन भी बढ़ गया. और तीसरा सिलेंडर जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बैंकिंग के थ्रू ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट ग्रोथ लाइन बढ़ा दी, जिससे बोरोविंग बढ़ गई. तो वो तीसरा सपोर्ट क्रेडिट लाइन का. तो आप देखेंगे तीनों सिलेंडर जो है फायर कर रहे हैं. एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट योर फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है वो प्रूडेंस है, मेंटेन हो रहा है. क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि अगले आने वाले बच्चों को उधारी दे के ना जाए. एंड देयर इज बीन लॉट ऑफ परसेप्शन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. सब लोग बोल रहे हैं पूरा पैसा डिफेंस में जा रहा है गवर्नमेंट का, ये इंडिया पाकिस्तान का. तो मैंने सोचा ये भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं. चलिए, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनियन जो अकाउंट्स है, एट अ ग्लांस लेवल अगर आप हम लोग देखते हैं, तो हमने कुछ एक इंडस्ट्री ली हुई, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है. तो 2025 जो ब्लू लाइन है ये अभी लेटेस्ट है, और जो ऑरेंज रेड लाइन है वो लास्ट ईयर का है. तो देखिए रेलवे में इन्होंने बहुत बड़ा बजट लिया, रेलवे में इन्होंने बजट बढ़ाया. उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में पिछले साल से आगे बढ़ाया. डिफेंस में ऑफकोर्स बढ़ाना ही था, तो उन्होंने डिफेंस में बढ़ाया. बट ये इंडिकेट करता है कि प्योर डिफेंस में कर रहे हैं क्या, कि ऐसा कुछ सुनने आया था बीच में कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, giving all the money to defense guys and supporting them big time, and therefore it's happening. No, some amount of incremental additional budget is allocated to them, but not at the cost of other various departments. So they are also being given good amount of importance. Then Ministry of Communication, you see government has undertaken big capex there. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, big time. Ministry of Education में इतना नहीं हुआ है. And Ministry of Coal. So coal गवर्नमेंट का ये फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, कोल, ग्रीन एनर्जी, कोल का इंपोर्ट कम करवा के, और उस पे एडिशनल वो कोल की खदानों में उन्होंने पैसा डाल के वहां से वो कोल निकाल रहे हैं, particularly in Jharkhand area, which is going to help the economy big way as we move ahead.
So all that work is going on. This is the GST number. April, May, June, it's going up. Last month was a bad month where it has slowed down, and this was basically an adjustment of the quarter. Therefore, for the first time in this quarter, it has grown below the nominal GDP growth. So nominal GDP growth in India is about 9.7, and this time this has grown at 6.2%, but otherwise make a number देखते हैं तो extraordinary it has grown by 16.4%. April was 12.4%, uh, and overall June is about 6.2%. So जून का जो जीएसटी कलेक्शन है वो कम हुआ है. जून में एक्चुअली बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हुए हैं अप्रैल और मई के जो पे हुए थे. तो दैट्स अबाउट ऑलमोस्ट 36,000 crores of money was basically a part of the adjustment which happens at the quarterly. Let's look at import and export data. So हमने 2025 का जो है वो डार्क वाला सर्कल है और 2024 से वो लाइटर सर्कल है, लाइटर बार है. एंड इसमें आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमने लिखा है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज इंपोर्ट. मतलब क्या होता है बेसिकली कि गुड्स क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है. दूसरी तरफ होता है सर्विस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ओवरऑल टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो टोटल एक्सपोर्ट में अगर देखते हैं हम लोग तो लास्ट ईयर के मुकाबले वी आर एट अ बेटर लेवल. जबकि सब लोग बोल रहे थे कि भाई इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड आ जाएगा, इकोनॉमी इंडिया इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, बैठ जाएगी. ऑल दैट वी वर हियरिंग, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन वी सॉ दैट नंबर, it is quite good. It has only grown by 2.8% overall improvement, and the total import has declined by almost 1%. So that is also a good thing, and overall trade balance is about 2.73 billion. This is improved number that I am referring to. So overall, we see that this reflects growing strength in India service sector and a moderation in import demand. So जितना import कम होगा और export बढ़ेगा उतना ज्यादा economy expand करेगी. This is basically a chart that I picked up where I looked at the index-wise share in total market cap. Now, this is the data of last 14 years. I picked up from 2011 onwards. And there, what is coming out interestingly is that both people are paying good amount of interest in mid and small cap particularly, and their growth is also shaping up, especially post COVID. So therefore, as a result of that, large cap overall investments, so index wise share, so the overall share of the large cap is going down, and or maybe at a stable rate post 2020, but mid and small cap is shaping up big time. So over the years, the Nifty 50 share in NSE total market cap has steadily declined from 60% in 2014 to 44%. And indices like Nifty mid cap, which is 150, and Nifty small cap 250 have seen consistent gains, indicating deeper market participation and broader investor interest beyond large caps. This is the index dashboard, so I just thought I'll pick up the data and see and compare how has been the performance. So Nifty 50 has delivered 3%. Overall, mid cap is about 4% last 1 month. FPI flow, very, very important aspect. So January, February, we saw major drawdown happening, and FPIs, but they were taking the money out during the global tension of the trade war. And now the same seems to be settling down. And पिछली ये financial year में हमने देखा है, which is April, May and June, FPIs are coming and buying something. So inflow strengthened in May and June, with FPI investing 19,000 crores and almost 15,000 crores respectively in India's macroeconomic resilience. So I mean they've been continuously buying it. This is a market cap to GDP. Remember, it inched up to 145%, has come down to now 127%, and last 10 years of average is about 87%. But those were the days when the base was small, so
I believe that this is the new normal and it will continue to be at about 125%. This is the valuation currently 1 year forward. I looked at Nifty 50, which is large cap, mid cap, and small cap. And historically, large caps at about 19p, currently trading at about 22. Mid cap is about 30 now. Historically, it is about 25 historical P. And 1 year forward, small cap is about 26. And historical numbers are 17 and a half. Advanced declining ratio is a number of shares which are going up is on a higher side from April onwards. So therefore, this number clearly indicates that it is in our favor. Number of shares are going up vis-a-vis number of shares which are going down. So overall, it is in a positive mode. So with that, I'd like to conclude my session here. And at Allport Experts, we continue to uh, organize these kind of data points for you and share our views on the markets. And I would be happy if you have any question for me. Thank you. Thank you. Over to you, Samir. So till now we don't have any question from our viewer, but we have some question विकास जी जो Yeah. आपसे चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी. आज के डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं वैल्यूएशन को लेकर के, हम्म. तो इस पे आप डालेंगे थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे कि अभी इंडिया का वैल्यूएशन क्या है, इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, कैसा बिलीव है कि इंडिया अभी ओवर वैल्यूड है, तो ये सही समय नहीं है, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर करेक्शन। उनका मानना है कि करेक्शन आएगा और कुछ वैल्यूएशन चीपर होंगे तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। थोड़ा आपका राय क्या है इसके बारे में? देखिए, मेरा ये सोचना है कि समीर जी, मैं पिछले 25 साल से मार्केट देख रहा हूँ और हमेशा सिचुएशन ऐसी ही लगती है। हमेशा लगता है कि मार्केट गिरेगा और हमेशा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये इंडिविजुअल ओपिनियन होता है एंड मार्केट इज बिगर देन दीज ओपिनियंस। जो इकोनॉमिक डेटा मैंने अभी क्लियरली इंडिकेट्स किया आपको कि भाई मोटा मोटी व्हेन यू लुक एट एनी इकोनॉमीज देयर आर 3-4 थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड एट, which will give you some perspective about where are we headed. So your GDP is growing at about 6.4%, and number has revised from 6.3% to 6.4%. And it is the highest growth across the globe, by the way. So that is one. Second, your interest rate cycle clearly indicates that it is declining. मतलब cost of capital कम हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है। क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ती है तो लोन लेने वाले लोग बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और जब ये क्रेडिट मार्केट में जाएगा तो वो उससे रोलिंग होगा, फंड्स की रोलिंग होगी तो उससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, which is in the positive. Third, which is biggest concern is inflation. So inflation number, RBI wants their target rate is 4%, and it is very much closer to that, and it is under control. And all your three engines are firing: government engine in terms of capex, banking system which is supporting the liquidity, RBI, and consumption which is growing up. And fourth important, that fiscal deficit is not going up. इस तरह के सिचुएशन में आप मुझे बताइए कि आपको कौन से ट्रिगर दिखते हैं। पहला ट्रिगर दिखता है कि लेट्स इवैल्यूएट दैट। द फर्स्ट ट्रिगर व्हिच कम्स टू आवर माइंड इज दिस डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया। नाउ डील यूके के साथ में ऑलरेडी चल रही है। सो दिस यूके डील दैट वी आर रेफरिंग टू is basically a plan B for India, where if plan A doesn't work, then plan B they are shaping up. They are trying to structure that, and that has also come to the last stage now. And the discussion is going on if between US and India, and they are saying that they are very close to each other in terms of the finalization of the deal. They're not comfortable with the dairy prices. So, the milk prices will go down drastically, particularly soya, if that happens, and that will affect the farmer community big time. Therefore, India is not okaying that. And as a result of that, the deal is that got stuck. What I got to know from my old sources from Ministry of Finance. But other than that, and that has I shown you also that what kind of impact we can have if this deal doesn't get materialized. Our growth rate will come down from 6.4% to, it can come down to 6.3%. But India will continue to grow at 6.3%. So
Tell me any major trigger that comes to your mind, or maybe we'll open up for our investors. I can see that there are two investors who wants to ask question, Rajiv Kumar ji and Sharat ji. So maybe if we can allow them to speak, so that we can take their questions. So according to me, I don't think there is any concern, and rather it is reviving the economy. And maybe these numbers, once you cut down the interest rate, it takes about a quarter to reflect the same in the economy. So this time during Diwali, it is going to be a dhamaka Diwali, Samir bhai, in terms of consumption. The celebration, the numbers that we want to read out next 3 4 months. My sense is that the market should do well in the next quarter or two as we move ahead. And I have allowed Rajiv ji and Sharat ji to speak, so they can unmute and speak. So Rajiv ji, if you have any question, please speak. Hello, hello, sir. Can you hear me? Yes, Yeah, sir. yeah, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. मेरा एक सवाल है जी. कि पीछे मैंने कहीं पे देखा कि प्रोमोटर्स आर डाइल्यूटिंग देयर स्टेक इन देयर कंपनी, वो डाइल्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट कैपेक्स तो आ रहा है लेकिन प्राइवेट कैपेक्स इज नॉट कमिंग। तो डू यू थिंक जब तक प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आता और ये मार्केट में प्राइवेट कैपेक्स लेकर के नहीं आते, तो ये कंजम्पशन भी, जो आप कह रहे हो कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, मैंने कहीं पे देखा कि ये कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जो एक्सपेक्ट किया गया था इनकम टैक्स रिड्यूस करके और जो इन्फ्लेशन कम हो करके। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सर, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और आपका ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। देखिए, जो promoters हैं, अभी वो there is a transition from first generation to second generation now. So obviously there will be some amount of profit bookings which will take place, and which has already taken place, as rightly observed by you, कि promoter ने कुछ एक लेवल पे कहीं कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। बट बहुत ज्यादा अगर मैं आपको इसको ब्रॉड बताऊं, तो दूसरा पहलू ये है कि एफपीआई का एक टाइम पे, out of 100 rupees, FPI used to have almost 20 to 23% kind of exposure in India in terms of numbers, which has come down to a decadal low of 15%. And the overall numbers of the promoter, which is at about 57% of the holding of the overall market cap, has not come down to 56% also. So there are some profit bookings, but it is above level, but percentage wise it has not come down by even 1%. So randomly kuch promoters ne book kiya hai, but not all the promoters. That's number one. So 57% is held by promoters. 15% is now held by FPIs, so which is about 72-73%. And बाकी का जो है, that's divided between mutual fund and non-promoter, non-institutional, which is individual holdings. So it is a very good mix. So कुछ percentage वहां पे book हुआ है, और which is gone in the public market. आपका second question है, अच्छा पहले क्वेश्चन में क्या, ये बहुत ज्यादा कंसर्न है कि बहुत सारे प्रोमोटर्स, लाइक लार्ज कंपनीज के प्रोमोटर लाइक हिंदुस्तान लीवर और मे बी नेस्ले और इस तरह रिलायंस, आर दे सेलिंग their promoter stakes big time and reducing from 57% to below 50% or something like that? The answer is, as of now, that data is reflecting that it is at the same level, except for 1% here and there. The other question that you had about is private capex. Yes, कोई भी बड़ा capex नहीं हो रहा है प्राइवेट, कि भाई कोई बड़ा प्लांट लगा रहा है पहले के जैसा, और 5-6 लाख 7 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का प्लांट लगाया, 1.5 लाख 2 लोगों को जॉब दिया. That is not happening. But on the other side, I had shown this data last month in my previous slide, and I would request Samir ji to identify and share those data points with you from your, after getting your email ID, that private capex is also increasing in India,
but not the way it was used to be earlier. That I agree. But continuously it is expanding. It is not at all uh, 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 under the. I mean, nobody can say that it is degrowing. It is growing, but not the pace that it used to be. The bigger projects are not coming in India, but at a mid level, private consumption is increasing day by day. Vikas, Thank you, sir. Thank you. Thank you. Vikas, Beautifully explained. Thank you. ओके, थैंक यू सर। विकास जी, क्वेश्चन आया है हमारे पास, उन्होंने पूछा क्या है सौरभ जी का क्वेश्चन हो गया? राजीव सर का एक क्वेश्चन है मेरे पास, इनका तो हो गया, इन्होंने प्राइवेट कैपेक्स के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि लुकिंग एट द डेटा प्रेजेंटेड, व्हाट वुड बी द मोस्ट लुक्रेटिव अप्रोच, ग्रोथ और वैल्यू? तो थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल्स देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड हमारा ये मानना है एट ऑल पोर्ट एक्सपर्ट्स की हमें कभी भी पैसा अगर 100 रुपीज है तो पर्टिकुलर स्टाइल में फुल्ली डिपेंडेंट होके पैसा नहीं देना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस और अपना एक फेलियर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पब्लिकली। So me and my elder brother have been investing in various AIFs, PMSs and mutual funds, and we always look at first thing as style. And at one point of time, we felt that this is the only style which works in India, which is a growth style. And people pay for growth and nothing else, and we don't believe that any other style would ever work. And we realized, this is 2012-13 that I am referring to. And within 4 years, we realized that now value style started performing very well, and all the growth stocks have started consolidating and they started declining. Uh, some of the examples were like Page Industry, Eicher Motors, and all that, which were growing like anything and then started degrowing. Then we felt that, oh, value is a very good style, you have good amount of margin of safety, and we started buying some turnaround companies. And 2018-19 was a time when economy got hospitalized in ICU, credit growth come down, growth number has come down. You had INFS fiasco. We realized that those companies which are likely to turn around went back. And when they went back, the valuations gone almost negligible, as in it has gone down by 70-80%. We felt that, okay, value also doesn't. Then we looked at contrarian, you need to be contra, So 2020, suddenly the market collapsed by 37% during COVID time, and the contra guy came up and said that, look, we'll do something different this time. And because they were sitting on cash, as a market indicated that, valuations are not justified, and the contra guy started taking a lot of pride and started doing well for sure and deserving pride. So what I believe is that, sir, आप style कोई predict नहीं कर सकता है मार्केट में, बट हमारा एज एलोकेशन, मेरा ये मानना है, एज पार्ट ऑफ द एसेट एलोकेशन, यू शुड हैव लुक एट maybe 20 rupees giving to value style portfolio manager, someone who is extremely good at identifying those turnaround stories, buying at a cheaper valuation, cheaper in the sense that valuations which are well justified. If the small cap is trading at 40 ka P and these guys are maintaining 20 ka P at a portfolio level, I would say very good value guys, value driven portfolio managers. 20 rupees आप अपने growth में रखिए. You cannot ignore the growth. Growth continues to demand high premium. And अगर बोलेंगे कि भाई मैं 15,000 का डिक्सन टेक्नोलॉजी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे महंगा लगता है और मैं 500 रुपए वाला शेयर लूंगा, तो it may not work also, because this 15,000 stock will become 25,000 rupees stock maybe 2 years down the line. So you'll have to give 20 rupees to growth. 20 rupees, you have to have a contrarian guys, someone who goes absolutely against the thought process of the individuals. And when everybody is buying, they would be selling, and when everybody is selling, they would be buying. So you have to have contrarian approach towards it. 20 rupees, now you allocate something in quant investing also, which is very important these days. And I personally believe that technology will play an important role, especially the way AI is shaping up in India in terms of investing styles. I believe that you should have 20 rupees of exposure to be given to quant managers also. Now it could be quant PMS, quant AIF, quant mutual fund, that you can decide. Those who work on quant methodology,
quantitative analysis. They pay more attention to those aspects. And maybe 20 rupees you should keep cash at this point of time. Maybe as you see some corrections happening, maybe it's a time that you should accumulate more, buy more and during the dips. So that is what the strategy I would like to follow. So answer is, I may not be able to give you answer which style will work going ahead. That's the reality. तो और तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है विकास जी, का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई भी व्यूअर्स को लगता है कि उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अलाउ यू टू स्पीक, नहीं तो आप चैट बॉक्स में डालें। Okay, if there are no question, we can conclude, Samir ji. राइट। सो थैंक यू विकास जी, आपने काफी अच्छा डेटा पॉइंट्स दिया है, बताया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इन्वेस्टर को ये डेटा पॉइंट्स हेल्प करेगा और वो इस डेटा पॉइंट्स की मदद से इन फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच विकास जी। Thank you once again for taking the time out from your busy schedule. Next month, we'll again meet with the similar data points to give you some idea about where are we headed as an economy and what action you should take accordingly as far as your portfolio is concerned. Thank you.